Yes, Atul bhai, I think the moment I start recording, you can begin. Yes, Atul bhai, please begin today's meeting. રેવાલોજ વડોદરા, રોહિતલોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિલોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ઉત્કલ ફેડરેશન, કર્ણાટક ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટ પ્રવચન અર્પણનો સિદ્ધાંતના વક્તા શ્રી નરસિંહભાઈ ઠાકરિયા, પૂર્ણમાસી પટનાયકજી અને હર્ષલ રાજેશજી અને મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત કેશવરબેન દસ્તુર આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, Hidden hidden love, love, embracing embracing all in one. oneness. May each who feels himself as one with thee May each who Feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti. Thank you. થેન્ક યુ. કેશવરબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई और सभी का स्वागत है. और आदरणीय नरसिंह भाई बहुत दिनों बाद हमारे बीच आए हैं और बहुत ही वयोवृद्ध के साथ साथ बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही अनुभवी स्पीकर हैं, ज्ञान के स्रोत हैं. वे पोस्ट ग्रेजुएट हैं इकोनॉमिक्स में. वो गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट की सर्विसेज से रिटायर हुए. बहुत ही दिल से वो थियोसॉफी से जुड़े हुए हैं. स्टडी कैंप में पढ़ाते हैं, लेते हैं. वाराणसी, भोपाली कई जगह पर उन्होंने लिए हुए हैं और नेशनल लेक्चरर तो हैं ही, लेकिन मैं तो उन्हें भीष्म पितामह कहता हूँ थियोसॉफी का, इतना उन्हें नॉलेज है. और वे सनातन लॉ सूरत के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन के भी वाइस प्रेसिडेंट. लाइफ मेंबर तो थियोसॉफी के हैं ही, क्योंकि जीवन से ही जुड़ा है. तो नरसिंह भाई, आदरणीय, आपका स्वागत है. और आज का ये जो विषय आपने हिंदी में लिया है, बहुत ही रोचक विषय है, हमें उससे अभिभूत करें. धन्यवाद. Thank you. Should I start, sir? Yes sir, please start. First of all, I would like to thank Taral Bodseji and Three Loses for inviting me to TS Trivedi Tuesday meet as a national lecturer on topic of the law of giving, Arpan Ka Siddhant. And I also welcome all my fellow speakers today. Now, starting on by our topic for the day, our topic is the law of गिविंग. सफलता का आध्यात्मिक सिद्धांत है अर्पण का सिद्धांत, यानी दूसरों को देने का सिद्धांत. इसे देने व पाने का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह जगत आदान प्रदान पर ही तो चल रहा है. यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रहता, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं रहता. आपकी देह गतिशील है और जगत की देह के साथ आप निरंतर आदान प्रदान करती रहती है. आपका मन मस्तिष्क ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ प्रभावित होने व प्रभावित करने की पारस्परिक प्रक्रिया में निरंतर रत रहता है. आपकी ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति है. जीवन का प्रवाह कुछ और नहीं, बल्कि जीवन को रचने वाले तत्वों और बलों का परस्पर तालमेल व सामंजस्य में रहना ही है. इन तत्वों व बलों का यह सामंजस्य और समन्वय ही आपके जीवन में अर्पण के सिद्धांत को संचालित करता है, क्योंकि आपका तन, आपका मन और यह जगत लगातार ही सक्रिय आदान प्रदान में रहते हैं. इसलिए आदान प्रदान की ऊर्जा के चक्र को रोक देना रक्त के प्रवास के चक्र को रोक देने जैसा होता है. रक्त प्रवाह का चक्र जब थम जाता है, तब उसमें थके बनने लगते हैं. वह
जमने लगता है, यह अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए अपनी संपदा, अपनी समृद्धि व प्रचुरता को पाने के लिए या हर उस चीज को पाने के लिए जिसे कि आप चाहते हैं, उसे देना और पाना दोनों आवश्यक है, ताकि आपके जीवन में उसका चक्र बना रहे। समृद्धि का अर्थ है विकसित होना, भरपूर बढ़ना, और प्रचुरता का अर्थ है आधिक्य होना, बाहुल्य होना। समृद्धि के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है एफ्लुएंस, अर्थ का प्रवाह होना। इसलिए प्रयुक्त अंग्रेजी के ही दूसरे शब्द करेंसी का अर्थ है दौड़ना, बहना। धन वास्तव में जीवन की शक्ति का वह प्रतीक है जिसका हम आदान प्रदान करते हैं। धन प्रतीक है उस जीवन शक्ति का जिसे हम इस जगत को अपनी सेवा देने के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर हमारी नियत पैसे को पकड़े रखने की और उसे तिजोरी में बंद रखने की होगी, तो हम उसके प्रवाह को, उसके चक्र को रोक देंगे। और चूंकि यही जीवनी शक्ति है, इसलिए तब आप उसे अपने जीवन में वापस आने से भी रोक रहे होंगे। उस शक्ति को हम तक वापस आने देने के लिए हमें उस शक्ति को, प्रवाह को रखना होगा, उसका चक्र चलने देना होगा। एक नदी की भांति धन को भी प्रवाह में रखना जाना चाहिए, अन्यथा वह अवरुद्ध हो जाएगा, उसका दम घुटने लगेगा और उसकी जीवन शक्ति मर जाएगी। उसका प्रवाहमय रहना ही उसे जीवित रखेगा और उसे जीवनदायी भी बनाए रखेगा। हर संबंध देने और लेने का ही तो संबंध होता है। देना तो लेने का ही बीज बोता है और लेना देने का बीज बोता है, और ऊपर जाता है वह नीचे भी आता है, और चला जाता है वह वापस भी आता है। वास्तव में पाना ऐसा ही है जैसे देना, क्योंकि पाना और देना इस जगत में ऊर्जा के प्रवाह के दो पहलू हैं, और अगर आप इनमें से किसी एक प्रवाह को रोक देते हैं तो प्रकृति की प्रज्ञा में हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। प्रत्येक बीज हजारों बनों की संभावना छिपी होती है, लेकिन उसके लिए बीज को किसी गोदाम में बंद करके नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उसे कोई उपजाऊ जमीन दी जानी चाहिए ताकि वह अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करके पनप सके। उसे ऐसी जमीन को अर्पित किए जाने से उसकी अद्भुत ऊर्जा भौतिक दृश्य रूप में प्रवाहित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। जितना अधिक आप देंगे उतना ही अधिक आप पाएंगे, क्योंकि तब आप जगत की समृद्धि का, प्रचुरता का चक्र अपने जीवन में चला रहे होंगे। वास्तव में जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह तभी बढ़ता है जब वह दे दिया जाता है, और जो देने पर भी न बढ़े तो वह न तो देने योग्य होता है और न ही लेने योग्य होता है। अगर देने पर आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ खो दिया है तो वह सचमुच में देना नहीं होता, और इसलिए वह बढ़कर वापस भी नहीं आता। जब आप अनिच्छा से या दुखी मन से देते हैं तो दान में कोई बल, कोई ऊर्जा नहीं होती। देने और लेने के पीछे आपका जो मंतव्य होता है, आपकी जो नियत होती है, वह सबसे अधिक महत्व रखती है। देने का मंतव्य और नियत हमेशा ही दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए सुख, खुशी उत्पन्न करने की होनी चाहिए, क्योंकि सुख व खुशी ही जीवन को संबल देने वाली व संभालने वाली होती है, और इसलिए अभिवृद्धि करने वाली भी होती है। देना जब हृदय से होता है और बिना शर्त होता है तो उसकी वापसी में भी देने के बराबर अनुपात में ही होती है। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस सेंटेंस। देना जब हृदय से होता है और बिना शर्त होता है तो उसकी वापसी भी देने के बराबर अनुपात में ही होती है। इसलिए देना उदासीन भाव से नहीं बल्कि सहर्ष होना चाहिए,
खुशी खुशी होना चाहिए। देने में मन का भाव ऐसा हो कि जब भी आप दें तो देने में आपको आनंद अनुभव हो। ऐसे देने के पीछे रहने वाली ऊर्जा कई गुना बढ़ जाया करती है। अर्पण के सिद्धांत पर चलना वास्तव में बड़ा ही सरल है। अगर आप खुशी चाहते हैं तो दूसरों को खुशी दीजिए, अगर आप प्रेम चाहते हैं तो दूसरों को प्रेम दीजिए, अगर आप मान सम्मान चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं तो दूसरों को मान सम्मान देना और प्रशंसा करना चाहिए, सीखिए। अगर आप भौतिक संपन्नता और विपुलता चाहते हैं तो दूसरों की भौतिक विपन्नता को दूर करने में उनकी मदद कीजिए। यह सिद्धांत व्यक्तियों, संस्थाओं, समाजों, समुदायों और देशों पर समान रूप से लागू होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो तो अपने मन से हर किसी का मंगल होने की कामना करें। दिस इज ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिपीट। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो तो अपने मन से हर किसी का मंगल होने की कामना कीजिए। देने का विचार करना, दूसरों की मंगल कामना करना या उनके लिए केवल दुआ करना भी उनको प्रभावित करने की शक्ति रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी देह अपने सार तत्व वाले सूक्ष्म रूप में ऊर्जा व ज्ञान वाले इस जगत के अंदर वास करने वाली ऊर्जा व ज्ञान का एक पिंड रूप ही तो है। इस चैतन्य जगत में हम चेतना का एक पिंड रूप ही तो है। चेतना शब्द में ऊर्जा व ज्ञान के अलावा भी बहुत कुछ निहित रहता है। इसमें एक ऐसी ऊर्जा व ज्ञान निहित रहता है जो विचार के रूप में जीवंत हुआ करता है। अतः इस विचारकर्ता जगत में हम हमारे के पुलिंदे हैं, हम विचार के पुलिंदे हैं और विचार में तो रूपांतरित कर देने की क्षमता होती है। दरअसल जीवन चेतना का वह शाश्वत नर्तन है जो सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के बीच, मानव देह और ब्रह्मांडीय देह के बीच और मानव मन और ब्रह्मांडीय मन के बीच प्रज्ञा के निमित्त स्वरूप स्वयं को एक सक्रिय आदान प्रदान के रूप में अभिव्यक्त करता है। जो आप पाना चाहते हैं उसे जब आप देना सीख लेते हैं तब आप उत्कृष्ट ऊर्जावान और जीवनदायी गति वाले उस नर्तन का श्री गणेश और संचालन कर सकते हैं जो कि जीवन के शाश्वत स्पंदन का अभिन्न अंग है। मुंशी जी, यहाँ से मैं दूसरे जो वक्ता है उसको बोलने के लिए मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूं तो ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। पूर्णमासी जी, आपका वीडियो ऑन है? हाँ जी। पूर्णमासी जी भी हमसे बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई है और मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका एक संक्षिप्त परिचय दूं, क्योंकि वे बहुत ही, जिस तरह से नरेश जी हैं उस तरह से पूर्णमासी जी भी काफ़ी समय से जुड़ी हुई है थियोसॉफी से, और वे भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। साइंस ग्रेजुएट हैं, ऑनर्स हैं विद डिस्टिंक्शन, और पोस्ट ग्रेजुएट हैं पर्सनल मैनेजमेंट में, और उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से उन्होंने ये सारे कोर्स किए हैं। वो बहुत अलग अलग कैपेसिटीज़ में काम कर चुकी है। IDCOL में एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, और उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था एज ए मैनेजर ऑफ HR। तो HR मैनेजर तो मतलब पूरे कंपनी की देखरेख करते हैं, तो अब आजकल वो थियोसॉफी की देखरेख कर रही है। और थियोसॉफिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो उन्होंने 2001 में TS ज्वाइन किया, और उसके बाद 2012 में से वो लाइफ मेंबर हैं, और 1995 से एक्चुअली वो लाइफ मेंबर हैं। लेकिन उन्होंने जो वर्किंग शुरू किया बहुत सक्रिय रूप से, वो थोड़े दिनों बाद किया। उत्कल फेडरेशन में वो बहुत अलग अलग कैपेसिटीज़ में कार्य कर चुकी हैं। शी वो सेक्रेटरी ऑफ मारू थियोसॉफिकल लॉज भुवनेश्वर 2004 से 2017 तक, जॉइंट सेक्रेटरी फेडरेशन की थी 2007 से 2017, और काउंसिल मेंबर इंडियन सेक्शन की 2014 से 2017 तक। वे उत्कल थियोसॉफिकल फेडरेशन
की सेक्रेटरी भी रही 2017 से 2023 तक, यानी अभी तक। प्रेजेंटली वो नेशनल लेक्चरर तो हैं ही, लेकिन वो एसोटेरिक स्कूल्स पर भी नॉर्थ ईस्ट डिवीजन की काफी सक्रिय रूप से कार्य करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि वे ट्रांसलेटर हैं और उन्होंने 2 किताब थियोसॉफी की, जिसका एक का नाम है आई प्रॉमिस और दूसरी का कर्मा, इन दोनों का उड़िया में अनुवाद किया है। बहुत सुंदर उड़िया बोलती हैं। अभी भी जब हमें उड़िया में बताएंगी, आधे लोगों को हो सकता है कि लैंग्वेज समझ में ना आए, लेकिन उसका मतलब जरूर समझ में आएगा। और उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं इंग्लिश में और उड़िया में, अलग अलग मैगजीन्स में छप चुके हैं, जर्नल्स में और न्यूज़पेपर में भी छप चुके हैं। बहुत सारी स्टडी क्लासेस उन्होंने कन्वे की है। और वैसे एक्सपीरियंस हमारी पूर्णमासी जी को मैं निवेदन करूंगा कि वे उड़िया में हमें सुमधुर स्वर में आज का ये फर्स्ट भाग ले। धन्यवाद। Thank you, Brother Taral Bansi ji. Respected brothers and sisters, namaste to all. At the outset, I must convey my gratitude to Brother Taral Munshi ji, Sister Archana Munshi ji, and my co-speaker, Brother NARSINH THAKARIA ji, and Sister from Karnataka, हर्षल जी। HARSHAL ji. Our organizers of Triveni Academy Tuesday meetup for giving me an opportunity to be a part of this today's program. पूर्णमासी जी, थोड़ा सा कैमरा टिल्ट डाउन कर लीजिए तो पूरा चेहरा दिखेगा। हाँ, बस 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 बस, बहुत बढ़िया, थैंक यू। I am now going to present the Odia translation of the Hindi talk of Brother NARSINH THAKARIA ji, the main talk, that is अर्पण का सिद्धांत in Hindi, but in Odia I have translated it दानर सिद्धांत. Now I am going to present the Odia translation. सफलतार विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांत मध्यरु दान बा अर्पणर सिद्धांत अन्यतम, अर्थात द्वितीय सिद्धांत। यहाको देवा ओ पाइबार सिद्धांत मध्य कहा जाए, कारण एही जगत बा संसार आदान प्रदान ही चालू अछि। एही संसार रे कौनसी पदार्थ स्थायी नुहे। आमर शरीर गतिशील और भौतिक जगतर शरीर संगे यार निरंतर आदान प्रदान करि आसुछि। आमर मन मस्तिष्क ब्रह्मांडीय व्यवस्था सहित प्रभावित हेबा और प्रभावित करिबा रो पारस्परिक प्रक्रिया रे अहर्निशी व्यस्त रहिछि। आमर ऊर्जा ब्रह्मांडीय बा कस्मिक एनर्जी रो अभिव्यक्ति यह अटे। जीवन रो प्रभाव बा गतिशीलता आउ किछि नुहे, बरं जीवन को गढ़िबार तत्व समूह एवं शक्ति बा बलर परस्पर तालमेल और सामंजस्य रे ही कार्यकारी हुए। तत्व बा बल समूह रे सामंजस्यता एवं समन्वय ही आम जीवन रे दानर सिद्धांत को संचालन करे। जेहेतु आम शरीर आमर मन एवं यही जगत सदा सर्वदा सक्रिय आदान प्रदान रे लिप्त रुहंती, तेणु आदान प्रदान ऊर्जा बा शक्तिर केंद्र चक्र को बाधा देबा बा रोकी देबा आम शरीर रक्त संचालन प्रक्रिया को बंद कर देबा सह समान। आमे जानिछे रक्त संचालन जेतेबेले बाधा प्राप्त हुए सेतेबेले रक्त जमाट बांधी जाए, थकापन लागे, फलरे रक्त प्रवाहर रास्ता मध्य अवरोध हुए। तेणु निजर धन संपद समृद्धि और प्रचुरता बा जहाँ सबू आमे निज जीवन रे पाइबा को चाहू ताकू आमे देबा और पाइबा माध्यम रे ही सुरक्षित रखि पारिबा। सेथिपई देबा और पाइबा दुईटी जाक जिनस निहाती आवश्यक, जहाँ फलरे यह एक चक्र रूपे कार्य करि चालिबो। समृद्धिर अर्थ अटे विकसित हेबा, भरपूर भावे बुद्धि पाइबा एवं प्रचुरतार अर्थ अत्यधिक हेबा। समृद्धि को इंग्राजी शब्द रे अफ्लुएंस कहा जाए, अर्थात प्रवाहित बा बहिबा। यार आउ एक शब्द इंग्राजी शब्द करेंसी मध्य कहा जाए बा दौड़ीबा। देखिया गले धन वास्तव रे जीवन शक्ति र प्रतीक, जहाँ को आमे आदान प्रदान मध्य करिथाउ। सेही धन रूपक जीवन शक्ति को आमे ही जगतर सेवा करिवार फल स्वरूप लाभ करिथाउ। एथिपई जदि आमर स्वभाव धन को ठूल करि रखिबा बा तिजोरी रे गोदाम घरे बंद करि रखिबा हुए, तेबे आमे तार प्रभाव को रोकी देइथाउ एवं सेही आदान प्रदान और देबा पाइबा चक्र को रोकी देबा हेतु यह जीवन शक्तिर यह जेहेतु जीवन शक्ति यह को रोकिबा अर्थ निजर जीवन को धन फेरी आसीबार बाट मध्य बंद कर देइथाउ। तेणु यही धन रूपक शक्ति को प्रवाहित करिवार प्रक्रिया चालू रखिबा सहित
ଏହି ଚକ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ପ୍ରବାହମାନ ନଦୀ ପରି ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହମାନ ରଖାଯିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ଏହା ଅବରୋଧ ହୋଇଯିବ, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ଲାଗିବ, ଶେଷରେ ଏହି ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଭାବମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବା ନେବା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜୀବିତ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନଦାୟୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେବା ଓ ନେବାର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଥାଏ। ଦାନ ଦେଲେ ହିଁ ପାଇବାର ବୀଜ ଆମେ ବୁଣିଥାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟଠାରୁ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଦେବାର ବୀଜ ଆମେ ବୁଣିଥାଉ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ ତାହା ତଳକୁ ଫେରି ଆସେ, ଯାହା ଚାଲିଯାଏ ତାହା ଫେରି ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଆମେ ଯେପରି ଦେବା ସେପରି ପାଇବା, କାରଣ ପାଇବା ବା ଦେବା ଏହି ଜଗତର ଊର୍ଜା ବା ଏନର୍ଜିର ପ୍ରବାହର ଦୁଇଟି ଦିଗ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦେବା ବା ନେବା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ରୋକି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀଜରେ ହଜାର ହଜାର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୀଜକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ବରଂ ଏହାକୁ ଉର୍ବର ଜମିରେ ବୁଣି ଦେବା ଫଳରେ ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଫଳରେ ଏହା ନିଜର ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିପାରିବ। ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ଦେବେ ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଗତର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଚୁରତାର ଚକ୍ରକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚଳାଇ ପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଦାନ ଆକାରରେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ନେବାର ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବା ଆପଣ କିଛି ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଦାନ ନୁହେଁ। ସେଥିଲାଗି ତାହା ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଇ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ରୂପେ ବା ଦୁଃଖୀ ମନରେ କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବା ବଳ ନାହିଁ। ଦେବା ଓ ନେବା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ମୋଟିଭ ଥାଏ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଦାତା ଓ ଗ୍ରହୀତା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ବା ସୁଖ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଜୀବନକୁ ସମ୍ବଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ ଯେତେବେଳେ ସହୃଦୟତା ସହିତ ତଥା ସତ୍ତ୍ୱବିହୀନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଫେରିବାଟା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦାନ ଅନୁପାତରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଆମର ବ୍ରଦର ନରସିଂହ ଠାକେରିଆ ଜି ଆକୁ ରିପିଟ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି, ଦାନ ଯେତେବେଳେ ସହୃଦୟତା ସହିତ ତଥା ସତ୍ତ୍ୱବିହୀନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଫେରିବାଟା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦାନ ଅନୁପାତରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ আলু বহাব নালাগে, আলুটো মই ভাজিম। ଆନନ୍ଦିତ ଭାବେ ଖୁସିର ସହିତ ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ଦାନ ଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅତୀବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ବା ଊର୍ଜା ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ଯଦି ଆପଣ ଖୁସି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରେମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଯତ୍ନ ପ୍ରଶଂସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ସମୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସ୍ଥା, ସମାଜ ଓ ଜନସମୁଦାୟ ପ୍ରତି ସମାନ ରୂପେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା କାମନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଚାହାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଦେବାର ବିଚାର କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର କାରଣ ଆମର ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଶରୀରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଏହି ଜଗତର ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ଏକ ପିଣ୍ଡ ରୂପ ହିଁ ଅଟେ। ଏହି ଚେତନା ଜଗତରେ ଚେତନାର ଏକ ଅଂଶ ଆମର ପିଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଚେତନା ଶବ୍ଦରେ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯାହା ବିଚାର ବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ବିଚାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ବିଚାର ବା ଚିନ୍ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଚେତନାର ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦମୟ ଗତିଶୀଳ ନର୍ତ୍ତନ, ଯିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ମାନବ ଦେହ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମାନବ ମନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେ।
जहाँ आपण पाइबाकु चाहंती ताहा आपण देबाकु शिखंतु तेबे आपण एक अति सुंदर सूक्ष्म उत्कृष्ट शक्ति संपन्न जीवनदायी तत्व तथा शाश्वत चिरंतन जीवन को स्पंदित करेंगे। थैंक यू पूर्णमासी जी। और हर्षल जी आपका स्वागत है। हर्षल is from Bangalore and she is also a second generation theosophist. Her mother is Gayatri ji, very experienced theosophist. And हर्षल जी ने CSE किया है KCG इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई से, एमटेक डाटा साइंस और मशीन लर्निंग PS यूनिवर्सिटी बेंगलोर से किया है, और वे इस वक्त डाटा एनालिसिस्ट हैं स्विस लर्निंग एक्सचेंज बेंगलोर में। उसके साथ ही साथ बहुत सारी प्रतिभा भी उसमें अलग अलग तरह से हर्षल जी के पास है। वे पब्लिक स्पीकर हैं, स्टूडेंट ट्रेनी हैं IIT इंडिया, और सबसे बड़ी बात काफ़ी भाषाएं जानती हैं, कन्नड़ जानती हैं, तमिल जानती है, हिंदी जानती है, इंग्लिश जानती है, तेलुगु जानती है, और ये सब के साथ वो स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देती है। तो आध्यात्मिकता को भी एक पढ़ाई के रूप में वे पढ़ाती हैं। तो आपको तो त्रिवेणी में एक ही दिन 3 भाषाओं में देना पड़ेगा, शायद वो रिकॉर्ड हो जाएगा। हर्षल जी प्राणिक हीलर भी हैं, थियोसॉफिस्ट तो हैं ही, और इस्कॉन की प्रीचर ट्रेनर भी हैं। वे स्टूडेंट काउंसलर हैं, भक्ति शास्त्री डिग्री होल्डर हैं मायापुर इस्कॉन के द्वारा, और साथ में वो स्टूडेंट काउंसलर भी हैं, भक्ति शास्त्री डिग्री होल्डर हैं, और नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम डिग्री होल्डर भी हैं सत्य साई बाबा पार्टी के द्वारा, और बाल विकास ट्रेनर हैं बच्चों के लिए। भक्ति प्रहलाद स्कूल USA और इंडिया की वो सपोर्टिंग स्टाफ हैं जो इस्कॉन की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत हम खुशनसीब हैं कि आज जुड़ी, और प्लीज इंग्लिश में अपना इस आज का विषय द लॉ ऑफ गिविंग पर बोलिए। धन्यवाद। A very happy evening to everyone. Thank you so much for the opportunity. The law of giving. The universe operates through dynamic exchange. Giving and receiving are different aspects of flow of energy in the universe. And in our willingness is to give that we seek. We keep the abundance of the universe circulating in our lives. This frail vessel, how emptiest again and again, the fullest is ever with the fresh life. This little flute of a reed, how hast carried over hills and dales, and hast breath to the melodies of eternal new. Thy infinite gifts come to me only to those who very small hand of mine. Ages pass and still thou pourest, and still there is room to fill. Rabindranath Tagore, Gitanjali. The second spiritual law of success is the law of giving. The law could also be called the law of giving and receiving, because the universe operates through dynamic exchanges. Nothing is static. Your body is dynamic, and the constant exchange with the body of the universe. Your mind is dynamically interacting with the mind of the cosmos. Your energy is an expression of cosmic energy. The flow of life is nothing other than the harmonious interaction of all the elements and forces that structures the field of existence. This harmonious interaction of elements and forces in your life operates as law of giving. Because your body and your mind and the universe are in constant and dynamic exchange, stopping the circulation of energy is like stopping the flow of blood. Whenever you stop the flow of blood, it begins to clot or coagulate or stagnate. That is why you must give and receive in order to keep the wealth and affluence or anything you want in life circulating in your life. The word affluence comes from the root word called affluere, which means to flow to. The word affluence means to flow in abundance. Money is really a symbol of life energy we exchange, and the life energy we use as a result of the service we provide to the universe. Another word for money is currency, which also reflects the flowing nature of energy. The word currency comes from the Latin word currere, which means to run or to flow. Therefore, if we stop circulating of money, if our only intention is to hold on to our money and to harder it, since it is life energy, we will stop its circulation back into our life as well.
In order to keep that energy coming to us, we have to keep the energy circulating. Like a river, money must flow, otherwise it begins to stagnate or clog or suffocate and and strangle. It's a very own life force. Circulating keeps it alive and vital. Every relationship is one of the give and take. Giving engenders receiving, and receiving engenders giving. What goes up comes down. What goes out must come back. In reality, receiving is the same thing as giving, because giving and receiving are different aspects of flow of energy in the universe. And if you stop the flow of either, you interfere with the nature's intelligence. In every seed is the purpose of thousands of forests, but the seed must not be hoarded. It must give its intelligence to the fertile ground. Though it's giving, it's unseen. Energy flows into the material manifestation. The more you give, the more you receive, because you keep the abundance of the universe circulating in your life. In fact, anything that of value in your life only multiplies when you give it. That when doesn't multiply through giving is neither worth giving nor worth receiving. If through the act of giving you feel you have lost something, then the gift is not truly given and will not cause increase. If you give grudgingly, there is no energy behind that giving. It is the intention behind your giving and receiving that is most important thing. The intention should always be to create happiness for the giver and the receiver, because happiness is the life supporting and life sustaining, and therefore guarantees increase. The return is directly proportional to the giving when it is unconditional from the heart. That is why the act of giving has to be joyful. The frame of mind has to be one which you feel joy in every act of giving. Then the energy behind giving increase many times over. Practicing the law of giving is actually very simple. If you want joy, give joy to others. If you want love, give love to others. If you want affection and appreciation, learn to give appreciation and attention to others. If you want material affluence or abundance, help other becoming materially affluent or giving abundance to them. In fact, the easiest way to get what you want is to help others get what they want. This principle works equally well for individual, for corporations, for societies and nation. If you want to be blessed with all the good things in life, learn to silently bless everyone with good things in life. Even though of giving, the thought of blessing or a simple prayer has the power to affect others. This is because of our body reduces to its essential state. It is localized bundle of energy and information in a universe of energy and information. We are localized bundle of consciousness in a conscious universe. The word consciousness implies more than just energy and information. It implies energy and information which is alive, has thoughts. Therefore, we are bundle of thoughts in thinking universe, and thoughts has the power to transform. Life is the eternal dance of consciousness that expresses itself as dynamic exchange of impulse of intelligence between microcosmo and macrocosmo, between the human body as well as universal body, between the human mind and the cosmos mind. When you learn to give that which you seek. Thank you, Harshal, right on time. Narsingh bhai, please go ahead with the second part in Hindi. Thank you. Narsingh bhai, unmute. Please unmute.
बोलो। हाँ हाँ जी, शुड आई स्टार्ट? यस यस प्लीज। अर्पण के सिद्धांत पर आचरण करने का, आदान प्रदान का चक्र पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप यह निश्चय करें कि जब भी कभी आप किसी से मिले तो उसे कुछ न कुछ अवश्य दे। यह आवश्यक नहीं है कि वह देना किसी वस्तु के रूप में ही हो, वह एक फूल भी हो सकता है, प्रशंसा के रूप में भी हो सकता है, और एक दुआ के रूप में भी हो सकता है, या तो शुभकामना या आशीर्वाद के रूप में भी हो सकता है। वास्तव में देने का सबसे अधिक सशक्त रूप किसी वस्तु के रूप में नहीं हुआ करता। जो उपहार आप दूसरों को दे सकते हैं उनमें सबसे अधिक मूल्य व महत्व रखने वाला उपहार है उनका ख्याल रखना, उन्हें स्नेह देना, उन्हें प्रशंसा देना और वह उन्हें प्रेम देना, और उनको देने में आपका कुछ खर्च भी नहीं होता है। जब आप किसी से भी मिलो तो मन ही मन उसे शुभकामना दो, उसकी हंसी खुशी की दुआ करें। इस प्रकार का मौन दान बहुत ही शक्तिशाली होता है। बचपन में जो बातें मुझे सिखाई गई थी और जो मैंने अपने बच्चों को भी सिखाई, उनमें से एक थी कि जब भी किसी के घर जाओ तो कुछ न कुछ लेकर जाओ। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस सेंटेंस। जब भी किसी के घर जाओ तो कुछ न कुछ लेकर जाओ, कुछ न कुछ उन्हें देकर आओ। कोई कह सकता है जब मेरे पास बहुत कुछ न हो तो फिर मैं दूसरों को कुछ कैसे दे सकता हूँ। आप एक फूल ले जा सकते हैं, एक फूल आप कोई एक कार्ड या कागज का एक पर्चा ले जा सकते हैं और उस व्यक्ति के बारे में आपकी मनोभावना को व्यक्त करता हो। आप उसे प्रशंसा के 2 शब्द बोलकर आ सकते हैं, दुआ देकर आ सकते हैं, सद्भावना व शुभकामना देकर आ सकते हैं। यह निश्चय कर लीजिए कि आप जहां भी जाएंगे वहां कुछ न कुछ लेकर आएंगे। कि आप जिस किसी से भी मिलेंगे उसे कुछ न कुछ अवश्य देंगे। जब तक आप देते रहेंगे तब तक आप पाते रहेंगे। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस सेंटेंस। जब तक आप देते रहेंगे तब तक आप पाते रहेंगे। जितना अधिक आप देंगे उतना ही अधिक आप विश्वास उस चमत्कारी सिद्धांत पर बढ़ता चला जाएगा, और चूंकि आप अधिक से अधिक पाने लगेंगे इसलिए आपके देने की सामर्थ्य भी अधिक से अधिक होती चली जाएगी। हमारी सच्ची प्रकृति वास्तव में प्रचुरता और विपुलता वाली है, बहुलता वाली है। हम स्वाभाविक रूप से संपन्न है क्योंकि प्रकृति हमारी हर आवश्यकता को और इच्छा को पूरा करने में हमारी सहायता करती है। हमें कोई अभाव नहीं है क्योंकि हमारी मूल प्रकृति ही विशुद्ध ऊर्जा और अनंत संभावना वाली है। इसलिए यह जान लीजिए कि आप जन्मजात समृद्ध है, संपन्न है, भले ही आपके पास धन कितना ही अधिक या कितना ही कम हो, क्योंकि जितनी भी संपदाएं हैं उनका स्रोत तो वह एक ही विशुद्ध ऊर्जा है। वह चेतना है जो कि जानती है कि हर आवश्यकता को आनंद की, प्रेम की, हंसी खुशी की, शांति की, अनुरूपता की और ज्ञान की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जा सकता है। सर्वप्रथम अगर आप इन चीजों को चाहेंगे, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए के भी, तो बाकी सब कुछ आपको स्वतः मिलता चला जाएगा। अर्पण के सिद्धांत पर जो आचरण करना है उसके बारे में थोड़ा सुनना बहुत जरूरी है। मैं जहां कहीं भी जाऊंगा और जिस किसी से भी मिलूंगा उसको मैं कोई न कोई उपहार अवश्य दूंगा। वह उपहार एक प्रशंसा भी हो सकता है, एक फूल भी हो सकता है या एक दुआ भी हो सकती है। आज मैं जिस किसी से भी मिलूंगा उसे कुछ न कुछ अवश्य दूंगा, और इस तरह जैसे मैं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी आनंद, हंसी, खुशी, समृद्धि और विपुलता के चक्र की प्रक्रिया का शुभारंभ करूंगा।
आज जीवन जो जो उपहार मुझे देगा उसे मैं आभार सहित स्वीकार करूंगा। मैं प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार आभार सहित स्वीकार करूंगा। सूर्य का प्रकाश, पक्षियों का संगीत, वर्षा की फुहार या सर्दियों की ठंडक, मैं दूसरों से मिलने वाले उपहारों को भी खुले दिल से आभार सहित स्वीकार करूंगा। वह चाहे वस्तु के रूप में हो या धन के रूप में या प्रशंसा के रूप में या दुआ के रूप में। जीवन के सबसे अधिक मूल्य व महत्व वाले उपहारों को देते और प्राप्त करते हुए मैं समृद्धि के चक्र को चलाते रहने के प्रतिबद्ध रहूंगा। जैसे किसी का ख्याल रखने का उपहार, स्नेह देने का उपहार, प्रशंसा करने का उपहार और प्रेम का उपहार, जब कभी भी मैं किसी से मिलूंगा तो मन ही मन में उसकी हंसी, खुशी की और उसके सुख व आनंद की कल्पना करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और नरसिंह भाई, मैं आपसे इतने अच्छे से परिचित हूँ, सूरत आपके घर भी आ गया। ये पूरा जो आपने अभी पढ़ा, ये जरूर किसी और ने लिखा है, लेकिन इसको अमल करते हुए मैंने आपको देखा है। धन्यवाद। पूर्णमासी जी, प्लीज ओडिया में बताइए। थैंक यू। बस आप हमारे घर पे आते रहना बस। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सर। दानर सिद्धांत बा आदान प्रदानर चक्रर आम यहाँ निज जीवन में कार्यकारी करवा, अर्थात आमको एक निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो जे जेतेबेले आमे अन्य मानकर संपर्क रे आसीबा आमे किछि हेले सेमानकू देबा। यह केवल कौनसी दामी उपहार बा टंका न होई पारे। गोटे फूलटे हो बा एक कम्प्लीमेंट बा अभिनंदन बा गोटे कार्ड हो बा गोटे छोट कागजर किछि प्रशंसा हो बा प्रार्थना हो बा मंगल कामना हो। वास्तव रे जे कौनसी अपार्थिव दान बा नॉन मटेरियल दान होची प्रकृष्ट दान और अत्यंत शक्तिशाली दान। अन्य मानक प्रति स्नेह, श्रद्धा, प्रशंसा, संवेदना, हस, प्रेम, जत्नशीलता, सेमानकर सुविधा असुविधा प्रति ध्यान रखिबा इत्यादि अत्यंत मूल्यवान उपहार आपण देई परिबे, जहाँकि आपण को कौन खर्चांत कराई नहीं। पिला बेले जेतेबेले मते शिक्षा दिया जाइथिला एवं मु मध्य मोर पिला मानकु शिक्षा देइछि जे तुमे जेतेबेले काहाको भेटिबाकू जीव किछि ना किछि तांको देब। किए कहि पारे मो पाखरे तो किछि नाही, मु कोन बा देई परिबि, किंतु आपण नीरवरे तांको आशीर्वाद, शुभेच्छा, आनंद और सद्भावना, हस खुशी, सदिच्छा इत्यादि तो देई परिबे। एगुड़िक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली। यह मध्य आपण निष्पत्ति नियंतु जे आपण जेउठाकू जिबे सेठारे किछि ना किछि देई करी आसीबे। जेते दिन पर्यंत देई चलीथिबे सेते दिन पर्यंत आपण प्रकृति बा नेचर रु पाई चलीथिबे। जिते अधिक अन्य मानक देबे सेते अधिक आपणकर विश्वास एही दानर सिद्धांत उपरे बढ़ी चलिबो। दान करबा फल रे आपण अधिक रु अधिक पाई चलिबे और आपणकर दान देबार सामर्थ्य मध्य बढ़ी चलिबो। वास्तव रे हमर ट्रू नेचर होची संपद, प्राचुर्यता तथा विपुलता अर्थात अफ्लुएंस व अबंडेंस। आमे स्वाभाविक रूपे संपन्नता पूर्ण। प्रकृति बा नेचर आमर प्रत्येक आवश्यकता और इच्छा को पूर्ण करिबारे सहायता करे। आमर किछि अभाव नाही, कारण आमर मूल स्वभाव ही विशुद्ध ऊर्जा और अनंत संभावना रे परिपूर्ण। सेथिपई जानि रखंतु आपण आध्यात्मिक रूपे जन्मजात समृद्धि संपन्न अटंती। पार्थिव स्तर रे आपणकर पाखे धन संपद अल्प बेसी थाई पारे, आपण किंतु विशुद्ध शक्ति बा ऊर्जार स्रोतरु आनित। ताहा हेउची उच्चतर चेतना, जहा कि प्रत्येक आवश्यकता, आनंद, प्रेम, हस, खुशी, शांति, संगति, सुसंगति, मेल और ज्ञानर समाहार। से जानती एही सब आवश्यकता को किपरि से पूर्ण करा जाई पारे। आपण जदि एही सब जिनिस को केवल आपणक पई नुहे बरं अन्य समस्तक पई इच्छा करिवे, तेबे बाकी सब जिनिस आपणको स्वतः मिलि जिवो। तापर देखिबा दानर सिद्धांत उपरे किपरि आचरण करिबा। तीनोटी पॉइंट मु जेउठाकू जिबी। प्रथम पॉइंट हैला मु जेउठाकू जिबी जहा सहित भेट हेबी ताहाको किछि ना किछि उपहार अवश्य देबी। एही उपहार एक प्रशंसा हेई पारे,
एक फूलटीए होई पारे बा एक आशीर्वाद बा मंगल कामना मध्य होई पारे। आज मु जो मानक भेटिबी तांको कौनसी ना कौनसी उपहार देबी और एही परी मु निज जीवन रे संगे मो निज जीवन एवं संगे संगे अन्य मानक जीवन रे आनंद उल्लास हस खुशी समृद्धि और विपुलतार चक्रर प्रक्रियार शुभारंभ करिबी। द्वितीय पॉइंट, आज जीवन मते जो जो उपहार देब ताकू मु कृतज्ञता सहित स्वीकार करिबी। प्रकृति दत्त समस्त उपहार यथा सूर्यंकर किरण, पक्षी मानकर काकली, वर्षार फुआर और शीतर ठंडा सबु किछि को सादरे ग्रहण करिबी। मु अन्य मानक द्वारा दिया जाइथिबा उपहार को खोला हृदय रे आनंदर सहित स्वीकार करिबी। यह वस्तु रूपे हेउ बा धन रूपे हेउ बा प्रशंसा रूपे हेउ बा आशीर्वाद रूपे हेउ। तृतीय पॉइंट, जीवनर सबुठारु मूल्यवान और गुरुत्वपूर्ण उपहार को देबा और प्राप्त करिबा संगे संगे समृद्धिर चक्र को बजाय रखिबा को प्रतिबद्धता रहिबी। जेपरि कि काहार सुविधा असुविधा प्रति ध्यान तथा जत्नशीलता उपहार, स्नेह, प्रेम, प्रशंसार उपहार इत्यादि इत्यादि। यह व्यतीत जेकोसी समय जहाँ सहित भेट हेबी सेतबेले नीरव रे तांकर सुख शांति हस खुशीर कामना करिबी। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णमासी जी। और हर्षल जी, प्लीज गो अहेड विथ योर इंग्लिश वर्जन। थैंक यू। When you learn to give that which you seek, you activate and choreograph the dance with an exquisite energy and vital movement of constitute the eternal throb of life. The best way to put the law of giving into operation is to start the whole process of circulation is to make a decision that anytime you come into contact with anyone, you will give them something. You don't have to be, it doesn't have to be in the form of material things. It could be a flower, a compliment, or a prayer. In fact, the most powerful form of giving are non-material. The gift of caring, attention, affection, appreciation, and love are some of the most precious gifts you can give to anyone. They just don't cost you anything. When you meet someone, you can silently send them a blessing, wishing them happiness, joy, and laughter. This kind of silent giving is very powerful. One of the things I was taught as a child, and which I thought my children also, is to never go to anyone's house without bringing something. Never visit anyone without bringing them a gift. You may say, how can I give to others when I myself do not have enough? You can also bring a flower, one flower. You can bring a note or a card which says something about your feeling for the person you're visiting. You can bring them a compliment or bring them a prayer. Make a decision to go to give wherever you go, to whomever you see. As long as you're giving, you will be receiving. The more you give, the more confidence you'll give to gain in the miraculous effect of this law. As you receive more, your ability to give more will also increase. Our true nature is one of affluence and abundance. We are naturally affluent because nature supports everything we need and desire. We lack nothing because of our essential nature is one of the pure. The potentiality and the infinite possibility. Therefore, you must know that you are already inheriting affluent, no matter how much or how little money you have, because the source of all the wealth is the field of pure potentiality. It is the consciousness that you know how to fulfill every need, including love, joy, laughter, peace, harmony, and knowledge. If you seek these things first, not only for yourself, but for also others, all else will come to you spontaneously. Applying the law of giving. I will put the law of giving into effect by making a commitment to take the following step. First step, wherever I go and whoever I encounter, I will bring them a gift. The gift may be a compliment, a flower, or a prayer. Today, I will give something to everyone I come into contact with. And so I will begin the process of circulating joy, wealth, and affluence in my life and in the lives of others. Second, today, I will
gratefully receive all the gifts and that life has come to offer me. I will receive the gift of nature, sunlight, and the sound of birds singing or singing showers in the first snow of winter. I will also be open to receiving from others wherever I be in the form of a material gift, money, or a compliment or a prayer. Third, I will make a commitment to keep wealth circulating in my life by giving and receiving life's most precious gifts, the gifts of caring, affection, appreciation, and love. Each time I meet someone, I will sincerely wish them happiness, joy, and laughter. Thank you so much. And बहुत ही सही समय पर सभी लोगों ने अपना अपना वक्तव्य समाप्त किया. In those who are here present, if you want to ask any questions, you can ask on the subject to NARSINH bhai. And if you have anything to add, please add. I'll just add this small thing that this entire thing was apart from सफलता के साथ आध्यात्मिक सिद्धांत by DEEPAK Chopra. Dr. DEEPAK Chopra had written this book, and it's really wonderful when NARSINH bhai picked this second law, which is the law of giving. Rest of the laws are also very good, and we will try to complete those one by one. Yes, anyone else? Yeah, Uday bhai, please go ahead. Jasu bhai, today you are also there. Uday bhai, unmute कीजिए आप. हो गया. ओके. खूब. हाँ बोल लो. नहीं, आप बोलिए, उदय भाई बोलिए. खूब खूब आभार आपका प्रवचन के लिए. नेशनल लेक्चरर और हमारा जीटीएफ के उप प्रमुख नरसिंह भाई ठाकरिया साहब, पौर्णिमासी और हर्षल मैडम का आज का प्रवचन जो नरसिंह भाई ठाकरिया साहब द्वारा किया गया, उससे प्रसन्नता उसीलिए हुआ कि खासतौर पर तरल मुंशी जी ने वो सेशन के बीच में बताया कि उसकी लाइफ ही ऐसा है, उसको उसकी लाइफ लिटरली वो ऐसी तरह से जी रहे हैं. जब हम कभी कभी उसके साथ आडीआर और मद्रास ट्रेन पे जाते हैं तो जो लोग पहचान वाला नहीं है उसको भी वो नाश्ता खिलाते हैं या कुछ पैसा देते हैं. रिक्शा वालों को भी ऐसा कुछ ज्यादा पैसा देते हैं. उसका भाव ऐसा है, वो देने का ही भाव है. हमारे लॉज में भी कभी कभी नाश्ता कराना और डिनर रखते हैं. तो ये ठाकरे साहब का लाइफ भी ऐसा अर्पण का सिद्धांत वाली है. तो इससे जो सुनने में बहुत प्रसन्नता आई. दूसरी बात कहूँ तो कबीर ने कहा है, सुरवर तरुवर संत जन चौथा वर्षे में परमारस के कारण चारों दरिया दे. तो ये अपना दे ही दूसरों को देने के लिए होना चाहिए. और रविशंकर महाराज ने लिखा था कि घसी में उजड़ा चाहिए. दूसरों के साथ कुछ परिश्रम कुछ देके अपनी जात को प्रकाशित करना चाहिए, वो लिखा था. गुरु नानक कहते थे, राम की चिड़िया राम का खेत. तो ये संतों की भी ऐसी बहुत भावना थी, अर्पण के सिद्धांत थी. तो इससे, और दूसरा उसने बोला कि दूसरे के साथ हम प्रेम, प्रसन्नता और सद्भावना रखना चाहिए. अकारण वो डाक का टेरवा खींचते हैं, दूसरों का बुरा देखना वो नेगेटिविटी है. शुभ कामना हमेशा चारों तरफ, शुभ कामना, प्रसन्नता अपने को रखना चाहिए. और आज का विषय डेली लाइफ के लिए बहुत अच्छा है. तीनों वक्ताओं को बहुत बहुत आभार, अभिवादन और धन्यवाद. और फिर नरसिंह भाई ठाकरे साहब को आज हिंदी में सुनते बहुत प्रसन्नता हुई, जो कि अभी होने वाले एमपी राजस्थान के उज्जैन के अधिवेशन में सितंबर एंड में हो रहा है. इसमें भी वो बड़ा वक्ता के रूप में है. और वहाँ भी हम सुनेंगे. बहुत बहुत आभार जी, धन्यवाद. यस, आप जसू भाई, प्रेमलता जी कुछ कहना चाहते हो? एक के बाद एक कहिए. The feeling of intense gratitude, if it is in the heart, you don't give for the sake of giving. You don't give for the sake of receiving something more, but you give it for the sake of giving only, with intense feeling of gratitude towards your Ishtadev. That this opportunity has been created for you, and I'm doing it for and on behalf of you. कुछ लेने की बात यही नहीं कि भाई नहीं रिसीव नहीं करना है. मेरे को जो दिया है ने वो बहुत दिया है, वो उसमें से मैं मेरा कंट्रीब्यूशन करता हूँ. कंट्रीब्यूशन नहीं,
मेरा योगदान देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्रेमलता जी। Hi, good evening, everyone, and thank you so much for the speakers. This is a very wonderful topic, and thanks to Harshal for taking up, even though she was busy in her work. She's a very talented and very spiritual girl. Thank you, Harshal. Just to add few points, the moment I heard this topic, I was recalling this point where it says, the best place to save your wealth is a poor man's stomach. I read this in an English book, and I was so amazed at this thought, because it is going to come manifold to you, and we don't think about that and give actually, but the thought, the advice was really great. And then I found this in the Tirukural book of a Tamil saint called Thiruvalluvar. This was found in literature. So the best place to save our wealth is a poor man's stomach. It is always advised that feeding the poor is very important and our responsibility. Second point is, it's the art of giving. It's also a science of giving. I was a little tense when I read this, that it is very important to give the right person, the right amount, and at the right time. We all don't think too much while giving most of the time, while donating. We all donate a lot even now. But it is very important to see the tasks behind it, how it is going to be useful for the society, and then give the right proportion, because we have to spend within limits. That is also advised in the same Tirukural book. You should be able to give only what you can and in the right proportion. Spending within limits, Benjamin Franklin says, it's like possessing the philosopher's stone, which is the highest virtue that is said everywhere. Philosopher's stone is the highest virtue, and they have given importance to the spending within limits, because if we have this quality, we won't get into any of the bad qualities. So we have to keep in mind about these points. And these are all materialistic point of view. From a spiritual point of view, Andy Hall says, just like we are miserly when we don't give materially to others, even spiritually we are supposed to share what we read, our knowledge. That is very important. Otherwise, it is equivalent to like mental miserliness. That is something that really scared me. We didn't think about these points that don't share easily, and we are quite lazy also. We don't actually inspired me that we should definitely try to share, even though people don't take it, it will reach the right person. For example, during my recent reunion, I gifted around 100 books, but 3 people only appreciated the theosophy book that I shared. That is fine. We don't need to, like Sir said, we don't need to expect the results and do anything. Just try to do what we can. Thank you so much for this topic. Thank you, Sir. Thank you, Taralji, for organizing. Yeah, thank you so much. और आपने सही कहा, Harshal really spoke very well. This was her first time in Triveni, but she is an experienced trainer and speaker. Yes. So we will hear more from her. Now anyone can go ahead. Shinde ji, Ashwaran ji, Vimal ji. Vimal ji. Yeah, I'd just like to say that one of the most difficult things to give is forgiveness. So it's very important to forgive. And wonderful point. Yeah. Another thing, that we also live in a very materialistic age. So we may like to think twice about giving material things, because there's so much of gift giving happening now. It's like we are increasing the garbage load of our earth. So I think what was mentioned, that give love, give affection, all that, I think in kind is a better way. And it requires strength to do that, because it's easy to give a physical gift, but it's difficult to give a gift which comes from the heart or the mind. So one can ponder before giving. What is wise to give? Because today we are increasing the garbage load of this earth. So we should be careful about that. That's all. Thank you, Vimal ji. Yes, Shinde ji. Well, I must thank
HARSHAL, which I heard first time. Nice you put the thought of circulation of energy. It is always in a circle. Giving and receiving is going on in the universe. Nice point which you focused. And I know very well THAKARIA, brother THAKARIA, he is always giving. Yes, I'm very yes, happy to listen him. Definitely. And Purnamasi is also very much Giver. process in giving. Yes. So all these three very nicely explained in different regional languages. And I also appreciate Vimalji and Premalataji. Premalataji also a very studious one, and she thinks deeply on the inner life, etc. So what I want to Thank you, sir. say, I must congratulate all these three people which are put their energy in explaining and giving their energy and thought to the whole universe. What I think, the way of spirituality is loving and giving. We are born to love. We are born to give. So loving and giving is the key. We must love and appreciate the manifestation of the God and develop devotion, bhakti, and learn to offer oneself completely. As we know, Vimalji just said, there is a habit of giving gifts nowadays. But on the contrary, we are also expecting return gifts. That is also the modern attitude now. When we give gifts, at the same time, what is the menu of return gifts? They also, nowadays in the class, students are asking like this, what return gifts we are receiving. So when we are giving, we must give. Because human heart is meant for giving, loving, harmonizing with the universal vibrations, as HARSHAL pointed out. So offering oneself to this universe, this is the first portal about the 7 portals which we study in the Voice of the Silence, that is charity. And the key of charity and love is immortal, that is dana, is giving. So such giving does not mean, as Vimalji pointed out, material donation, etc. It is utter readiness to give oneself and to forgive those who do not understand our motive. Because sometimes we are giving with full heart, but still there is some expectation of recognition. And that kind of forgive those who do not understand our motive and we just give. It is to sacrifice our time, energy, and thought. That is what theosophical perspective we think of this dana or charity. This is the first portal we have to cross through with the love immortal and charity immortal. This is what I want to contribute in this. I congratulate all the three. Really, I enjoyed. Thank you. Thank you, Shinde ji. बहुत नाइस शब्द थे आपके। अर्चना जी, मैं चाहूंगा कि शीतल गोले जी चली गई हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा है मैसेज में वो पढ़ दीजिए आप, उसके बाद हर्षवर्धन जी बोलेंगे। शीतल गोले जी कहती हैं, ठाकरिया जी नमस्ते। A man who behaves as he says, his words become powerful and effective. So was your lecture. Law of giving in simple sentences. I could understand many words in ODIA and in rich English. Thanks to all the 3 speakers. This is from Sheetal Gole.
Very good. I think it was really wonderful the way all three of you were speaking. It was just like you were passing baton to each other and the round was going on. Yes, Harshvardhan ji, please go ahead. Yes. The most important time today is to listen to Narsingh ji. And he delineated very wonderfully the principle of giving. And this is really a kind of illustrative subject. And what we give, it is in the circulation that comes back. That is what we understand. Then it has a kind of spiritual value. In giving, you become noble, you become full of selfless service, and you become very humble. When you give something to the child, there is love. But when you give something to the friend, there is a selfless love. If it is full of selfishness, when you give something as a gift, the word that is used, return gift, so that should not be used there. So when return gift is desired, there is no value of giving. So what you illustrated, that is really spiritual. We know that our mind is full of thoughts. Our mind is full of activities which we sometimes don't do. And sometimes we do just to harass others. So if we don't harass others, that means by the words, by our actions, and whatever we feel that this is not proper, we should keep silent. So in this way, giving is also a kind of silent work. You give something without words. No? You give something, some gift, and that is not known to others. So if you give by the right hand, the left hand should not know it. So that is a kind of proverbial thing that we understand. And Narsingh bhai, you delineated very nicely. We are proud of you. You are the national lecturer, you are the vice president of the GTF, and you really strive hard at this age, and we congratulate you. Absolutely. And Harshal, really, I congratulate you. For the first time I listened to you and you spoke very well, very well. And I like to listen to the rhythmic language. Language is the real grip of the lecture. When you say something, it should not be with the concluding lines or with the confusing lines. Because whatever you see or whatever you speak, that is the words that we see also. The words are seen, not only heard, but they are seen also. Definitely. So that is the charm of the language, and you really translated very nicely. It was not the translation, but it is the wonderful delineation and wonderful kind of piece of article. I would like to listen to that poem which you rendered from Rabindranath Tagore. Would you please repeat? If the time permits. That is actually the beginning of the letter sent by Narsingh bhai. Yeah, please go ahead. Yeah. That's wonderful in English. Yes. Yes. This frail vessel, thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life. This little flute of reed thou hast carried over hills and huddles. Thou hast breathed through its melodies eternally now. Thy infinite gifts come to me only to those very small hands. Just a moment. Small hands of mine. Yeah. Age passes and still thou purest, and still there is room to fill. Rabindranath Tagore, Gitanjali. Thank you very much. Repetition is also an art, right? Yes, when yes. We listen to something, is also an art. And yes, the Harshal words. is a regular words. teacher with ISKCON, so that makes a difference. Words come with the meaning from heart. That is the difference. That is correct. Narsingh bhai is following this law of giving. तो वो जो बोलते हैं वो दिल से ट्रांसफॉर्म होता है. पूर्णमासी जी भी वो फॉलो करती हैं तो वो होता है. पता नहीं शायद योग से तीनों लोगों को मैंने स्पीकर के लिए आमंत्रण, जैसे ही नरसिंह भाई का विषय मिला, मैं ये ढूंढ रहा था कि कौन कहेगा जो इसको समझ सके, और किस्मत से त्रिवेणी को तीनों अच्छे स्पीकर्स मिल गए. सोसाइटी की मीटिंग में एक बार ऐसी बात हुई, कुछ 6-7 आए, उन्होंने बोला हम आपको क्या दें? मैंने बोला आप हमें आपका समय दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए. वही सबसे बड़ी बात है, हमें आपका समय चाहिए, क्योंकि मीटिंग में आना,
समय के साथ चलना और जो लोग बोल रहे हैं उनको सुनना, ये भी एक अच्छा हमारे लिए होता है कि मीटिंग इस तरह से हो। आज हमारे साथ 35 लोग थे, 35 लोग हमें सुन रहे थे, आपको सुन रहे थे, और हमारी मीटिंग इस तरह से बड़ी एफ्लुएंस हो रही है। तरल जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। पूर्णमासी जी, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं भूल न जाऊं इसलिए। जस्ट आई रिमाइंड यू, एंड रियली यू स्पोक वेरी वेल इन कन्नड़. You have the command over English also, over Hindi also. Odia, sorry, Odia. Odia, yes. So, again, Harshal bhai, she is a writer also. She has translated 2 theosophy books. So naturally, that comes through. I think Abha ji, आप कुछ कहना चाहती हैं? मुंशी जी, मैं खाली आज लिसनर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा तीनों स्पीकर्स का। बस मैं थोड़ी सी चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि देने के पीछे, देना अच्छा है लेकिन आप किस थोड़ा सा कैमरा नीचे करिए, आप चंद्रमा की सतह पे पहुंच गई हैं। ओके, हाँ बस ठीक है। देने के पीछे की इंटेंशन क्या है आपके मन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चीज देते हैं लेकिन क्या इंटेंशन है हमारे मन में उस वक्त क्या फीलिंग है। इसका एक छोटी सी घटना बताती हूँ। हम लोगों की एक योगा क्लास होती है बुजुर्गों की, उसमें एक सज्जन है, तो उनके साथ बात हो रही थी तो उनका थोड़ा चेहरा बुझा हुआ था। तो मैंने कहा, आप क्यों इतने उदास हैं, जैसे होता है आफ्टर टॉक, आफ्टर योगा। तो उन्होंने कहा कि मैडम, आज मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, कल मुझे एक बैगर मिला और मैंने उसको अपना स्वेटर दे दिया एक, तो उसने मुझे वापस कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने पूछा, देते समय आपने कुछ सोचा था क्या? हम क्या सोचते हैं कि ये हमारी पुरानी चीजें, चलो इसको देने से हमारा एक सफाई हो गई। ये इंटेंशन, ये जो वाइब्स होती है, ये वाइब्रेशंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी। हम बेकारी को देते भी है, उससे हम धन्यवाद की आशा रखते हैं। अरे हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए कि हम कोई चीज देते हैं, वो उसको ले रहा है। तो ये जो इंटेंशन है, यस, ये इंटेंशन बहुत जरूरी है। बाकी चीजें सब अच्छी हैं, देने के लिए समय देना बहुत अच्छा है। और किसी को नॉलेज दीजिए तो नॉलेज से वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। बजाय हम मटेरियलिस्टिक चीजें दें, उसको अपने पैरों पे खड़ा हो, इस तरह की चीज दें, तो मेरे ख्याल से ज्यादा जी। बस इतना ही कहूंगी मैं। बाकी तो आप लोगों ने सभी कुछ कह दिया है और सभी स्पीकर्स को मेरा बहुत बहुत हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। बस अब सभा के अंत की ओर हम जा रहे हैं, तो मैं तो तीनों स्पीकर्स, नरसिंह भाई, पूर्णमासी जी और हर्षल जी से कहूंगा कि वो जो भी लैंग्वेज में अगर कुछ और अपने एक दो लाइन के या एक मिनट के अनुभव ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल करें, और फिर हम समापन की ओर चलेंगे। No, I would like to add, Yeah, because I told about the return gift. Return gift is always good. Whatever we take, we must also return it. That is what exchange is required. That concept of return gift is wonderful, but expecting return gift is not good. That is what I want to point out. Correct. सही कहा है। जी। Yes, हर्षल जी, नरसिंह भाई, पूर्णमासी जी, if you want to add. Actually, I was telling the 2 days back to brother Narsingh Thakaria ji, you should add something on the concept of perspective of theosophical literature. That is what Sindhesar ji told just now, that Dana Paramita. That I wanted to include in that today's topic. But time is limited, so I couldn't. No, you can include now. There is time. Whatever you want to say, please say. No. That I wanted to tell that whatever we are now, or all are in a material. Whatever we discussed, that is in a level of materialism. But on the spiritual line, we have to think unselfish and motive. Whatever all other speaker told now, that our motive should be unselfish without expecting any return gift or anything in return. But in total, whatever today we discussed, it is only adan pradan or giving and taking. All these things are, I think, in evolution, at the stage of evolution, it differs. So the Dana Paramita, which says the perfection beyond giving, we should go as a theosophist or theosophical member, students of theosophy, we should go beyond the perfection. Whatever we will give, there should be no giver,
no receiver and no gift. And all three will be in a, there will be not all the three will not be absent. They will be absent there. That should be our, the law should be like that, the law of giving according to theosophic, or the perfection of which goes beyond giving. That I wanted to say. That's all. Thank you so much for your addition. Yes, Harshal. Very good, Purnamasi. Yes. Yeah, really, Ashwaran bhai. Yes, Harshal, you want to add something? Yeah, so while reading, I just came to a point where it said that you should actually materially give abundance to other if you want material abundance. So somewhere we think, okay, fine, we should just, increase someone's salary just by that, or just give extra money, or help them in increasing money. But it is also very important, I guess Premlata auntie also said the same thing. It's very important for us to know who we are lending money, because somewhere money is also a karma. You should know that whoever you're helping to materially increase it should also be worthy of it, and has also done that much of work to give you that money or extra money. Yes, out of concern, yeah, we could just give a little bit, but sometimes we should also think that is it really necessary to give like others simply like that, because somewhere I feel that if people think that okay, there are people who are givers, so they just don't do their part of karma, or do their karma as in both work as well as in their karma as well. Somewhere I think when I give money to others, especially extra, I always think whether they're really worth of it, whether if it's the waiter who is coming for tips, I just get, if he was really done the service, I would, or if it's any person who is also asking for money, I would just evaluate whether that person is really done that much of karma, both in work as well as his karma there. So I feel I'm supposed, I feel that I'm supposed to be very conscious while giving that aspect, like increasing someone else's material abundance, because somewhere we should not do a wrong way of material abundance just because we are greedy to become material. Nice thought, and definitely our last from the master NARSINH bhai. Please go ahead. सर अनम्यूट कर लीजिए नरसिंह भाई, अनम्यूट करो बस। नरसिंह भाई अनम्यूट करिए। आप अपनो माइक चालू करो नरसिंह भाई। आ गया, कोई हेल्प कर रहा है। यस या गो अहेड। ये आज के जो मेरा अभ्यास की जो ये बुक चलती थी, उसमें आपने जो ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, बहुत आनंद हुआ। लेकिन मेरे जीवन में मैं ये सेंटेंस को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ, गिव एंड टेक। मेरे 2 ग्रैंडसन है अमेरिका में, तो जब कभी मैं डोनेशन देता हूँ कहीं भी, फेडरेशन में दूं या लोकल लॉज में दूं या तो कोई विडो संस्थाओं में दूं, तो उनकी ओर से कुछ न कुछ मुझे मिल जाता है। गिव एंड टेक, जब आप देते हैं तो प्राकृतिक व्यवस्था हो जाती है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप देंगे आपको मिल ही जाएगा। इट्स ए नेचुरल लॉ। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम मास्टर स्ट्रोक आपने दिया है। और अतुल भाई कहाँ है? अतुल भाई का वीडियो ऑन नहीं है, तो हाजिर है। कहाँ है? हाँ इधर ही है, आइए। अतुल भाई is there, अतुल भाई is there, yes अतुल भाई प्लीज गो अहेड। बस पहले કેશવરબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું। કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न कर्णं न जिह्वा न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः, न वाक्पाणि पादौ
न चौपस्थ पायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। केशर बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके वाणी खूब को आभार। और हर्षल जी, नरसिंह भाई जी और पूर्णमासी जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिंदे जी और हर्षवर्धन जी, आप हमेशा ही एक्सपर्ट कमेंट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग उपस्थित